This conference will now be recorded. Our today's topic is flow control. Okay. Our today's topic is flow control. Okay. In this flow control, what is the meaning of flow control here? Let's suppose I have some some lines of code I have. Okay. I have some lines of code. Okay. Some lines of code I have. So my requirement is to control the flow of this code. What is the general flow from top to bottom? Okay, line by line, first instruction read by the interpreter, second instruction, then third instruction, then fourth instruction, then fifth instruction, then sixth instruction, and so on. Okay, what is my requirement? Ki in some cases, let's suppose x equal to 10. Let's suppose x equal to 10. So skip these lines. Okay, my requirement is what? अगर x की वैल्यू 10 है तो ये लाइंस को स्किप कर दे, है ना, और इन लाइंस को रन कर दे. ठीक है, और ये पर्टिकुलर लाइंस को, इन पर्टिकुलर लाइंस को, ठीक है, 10 टाइम्स रिपीट करे. क्या करे? 10 टाइम्स रिपीट करे. इन पर्टिकुलर लाइंस को 10 टाइम रिपीट करे. इन दोनों को रन करे अगर x की वैल्यू 10 हो. अगर x की वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी हो तो इन सारी लाइंस को रन करे, इन सारी लाइंस को एज यूजुअल रन करे, है ना. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गोइंग विद द जर्नल फ्लो. ओके, वी आर नॉट गोइंग विद द जर्नल फ्लो. वी आर dividing our code, or we are control the flow of code according to us, that which code must be run, which lines of code should not be run, which lines of code should be repeated at multiple time. Okay, so this is basically our requirement. To complete this requirement, python gave us few concepts. Okay, python gave us few concepts, and what this concept is called, this concept is called flow control. What this concept is called? Flow control. So by the help of flow control, we can manage the flow of program, we can manage the flow of program, we can manage the flow of statements, that how the statement will run. Is it clear to all? Okay, now we have, okay, generally python provide three types of control flow statements. Python provide three types of control flow statements, and what they are statements is, yes, the first one is conditional statement. Conditional statements, or should I say selection statements. Okay, one is conditional statement, second one is selection statements. And what is the next type of control flow statement? We have iterative. Okay, iterative statement, or should I say
looping statement. Iterative statement, or should I say looping statement. Inside the, and third one we have, one more we have, yeah, third one, transfer statement. Okay, so three type statements we have. Inside the conditional statement we have first if else, if if elif, and if elif else. Okay, in control statement, in conditional statement, or should I say selection statement, we can use if statement, we have a if else, we have if elif, or we have if elif else. Only four combination we have. Either we can use only if, either we can use if else, either we can use if elif, or either we can use if elif else. Okay, now the second is, if I'm talking about interactive, so there is for loop, and another one is while loop. Okay, for loop and another one is the while loop. And in transfer we have break, continue, and pass. We have break, continue, and pass. So three statement inside the transfer statement. So this is the complete structure we are going to discuss. Okay, now let's start with the very beginning, if statement. Okay, okay, let's if syntax, if statement. Okay, here is syntax is what? Syntax. If condition, and what we have, statements. Single statement can be there, multiple statement can be there, huh? Statements. Okay, so many statements can be there. Statement, I also write more statement. Okay, multiple statement can be there. Okay, one more statement I have. Okay. Let's discuss this point very clearly. You know guys, there is a concept of indentation. Okay, indentation. indentation. ठीक है, indentation. What is the meaning of indentation? The meaning of indentation means this one. Like we are intended just like this, like a paragraph, we do paragraph from new line, right? Just that is called the indentation. Now I write some if statement, okay, with some condition, like I write if
if x इक्वल हो what 10k, ठीक है, f इक्वल हो 10k and 1 2 3 and 4. So these lines are treated as inside the if block. Okay, these lines are treated inside the if block. Okay, must be remember, after condition there must be colon sign. Okay, after condition there must be colon sign, and at least one statement must be intended with if statement. Okay, at least one, you must write at least one statement inside the if statement. If you don't write any statement inside the if, it generate an error. Okay, so these all statements, this one, this one, this one, this one, and this one, these all statements treated inside the if block. Okay, if the condition of this, if the condition of if is true, if the condition of if is right, then only these statements are executed, otherwise these statements will not be executed. And this statement is not intended with if block. Okay, this is called the if block. Okay, and this statement is not intended with if block, because if it start from here, this statement also start from here. So this is not the inside the if, this is outside the if. So this statement will not affect of this condition, either condition true, either false. This statement always run. This statement always run. Okay, let's take a simple example on it. Very simple example we can take. Just wait. Okay, I'm writing if x equal ho 10, and I'm inputting some value. Okay, तो मैंने एक वैल्यू इनपुट कराई, x को दी, and I am writing some code here. Print if block executed, ठीक है, if block executed, and I'm writing few more statements. Okay, and I'm writing here outside if condition, outside if condition. Okay, so simply see this statement, the last statement. I started from here, very beginning left side, but these four statements are intended with if block. Okay, if we input value of x is 10, then all four statements executed and this statement also executed. If the value of x other than 10, these four statements will not be executed. So this is called what? This is called control flow statement. We are controlling the statements according to our requirement. हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी statements को control कर रहे हैं according to our requirement. Okay, let's see one thing. Okay, I am just running this code. Just wait. Yeah, okay. Okay, and I input the value of x is, oh sorry, what happened, let me save, it is saved, yeah, 10. Okay, so you can see if block executed, and outside if condition executed. Again I'm running, I input 11. You can see the statements which are intended with if block,
These four statements are intended with if block. They are not executed in this case because condition is false, and outside if condition which is not inside if block is executed as well. यहां पर भी वो रन करी और यहां पर भी, चाहे कंडीशन हमारी फॉल्स थी चाहे हमारी ट्रू थी, ये स्टेटमेंट हमारी रन करेगी because that statement outside the if block. Okay, you know, you remember x equal है 10k. If I input x, if I input 10 here, if I input 10 here, in this case what it will return? In this case I input x 10, then x equal है 10k, then यहां पर क्या स्टेटमेंट रिटर्न हुई है? Yes, anyone? Yes, anyone? How if work? If condition कैसे काम कर रही है? Anyone having idea? Yes, anyone? Are you not able to listen me? Are you not able to hear me? No, Arun, I am asking x equal है 10k. What this statement returns? X equal है 10k. What this statement returns to if is, I am writing true. That's good. That's good. Anushka Kansal got my question. That true. You know, guys, that's good. T must be capital, है ना? Remember, Anushka, Ashish, T must be capital in case of true. So at place of x equal है 10k, यहां पर उसको क्या रिटर्न हो रहा है? वैल्यूट होके ट्रू. क्या वैल्यूट हो रहा है बच्चों यहां पर? ट्रू. अगर बच्चों मैं इस कोड को ऐसे लिख देता, राइट, मैंने इस कोड को ऐसे लिख दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? यस एवरीवन, what will be the output of this code? Is this code and I will input 100. मैं यहां पर 100 input कराऊंगा. What will be the output of this code? मैं 100 input कराने वाला हूं. In that case, what will be the output of this code? Yes, everyone. Tell me. Outside if condition will be the output. Okay, outside if condition. Okay, that's good. Tanush say if block executed, outside if condition. Okay, if block executed. Okay, that's good. चलिए देखो बच्चों, देखो, yes, that's good. अनुष्का very good. देखिए ये स्टेटमेंट तो चलनी है, इसका तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? बात करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स की. बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया डायरेक्टली ट्रू. बच्चों इससे पहले यहां पर लिखा हुआ था इफ x इक्वल है 10, ये लिखा हुआ, ठीक है ना? तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, जो x इक्वल है 10 के, ये जो स्टेटमेंट है, राइट, ये स्टेटमेंट भी इंटरनली यहां पर क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी. ये स्टेटमेंट भी क्या रिटर्न करेगी? यहां पर ट्रू. और इफ कंडीशन को अगर जो भी हमने एक्सप्रेशन दिया है उसके एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमें रिटर्न मिलता है ट्रू, बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो एक्सप्रेशन, जो भी हमने कंडीशन दी है, ये कंडीशन इवेल्युएट होने के बाद अगर रिटर्न मिलता है ट्रू, क्योंकि हम लोग यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, है ना? आइदर ट्रू आइदर फॉल्स. तो इफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर और इफ इवेल्युएट होने के बाद अगर यहां पर मिलता है हमें ट्रू, तो डेफिनेटली इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड.
ओके, इफ को क्या चाहिए, इफ को चाहिए इवेल्युएशन होने के बाद ट्रू। आपने क्या कंडीशन लगाई है, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, आपने क्या कंडीशन लगाई, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इफ स्टेटमेंट को सिर्फ क्या चाहिए, उसको चाहिए यहां पर ट्रू एंड वैल्यू विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। लेट्स आई एम शोइंग यू, okay, just wait, I'm showing you, just I save this back to the okay command prompt. Let's I run this. I input 100, but output is what, if block executed, if block executed and outside if condition, because what I write here, I write true. If I write false, yes, anyone can tell me, is it possible or not? Yes, anyone, is it possible or not? Possible, possible, that's good. Now I will input 10. Now I will input 10. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, चाहे मैं 10 इनपुट करूं, चाहे 10,000 100 इनपुट करूं, या 1000 करूं, या 10,000 करूं, या मैं यहां पर 550 कर दूं, क्या इस इनपुट से कोई फर्क पड़ेगा इफ की कंडीशन पर? नो, यस, दैट्स गुड अनुष्का, नो इफेक्ट, वेरी गुड एकता, दिव्या, वेरी गुड. The reason behind is Shoham, that's good. The reason behind is because we are not using that x. इस x की वैल्यू को तो हम कहीं यूज ही नहीं करा रहे हैं. That is the reason no effect is there. कोई इफेक्ट यहां पर पड़ेगा ही नहीं, चाहे मैं वहां पर फिलहाल के लिए, क्योंकि इफ की कंडीशन में डायरेक्टली मैं कांस्टेंट पास कर रहा हूं, either true either false. In that situation only there is no effect as well, right? Just I need to write one thing. Okay, just wait, I am writing. Okay, just wait, and I input here 1000 or 10,000, maybe 1 lakh, and outside if condition, because I what I pass here false, and if I pass false here, in that situation if condition will not execute this block. Okay, okay Tanu, okay, that's good. Now one thing more, okay, I again pass if x less than whole hundreds, if x less equal whole 100k, and I'm writing this state, yeah, okay, x less than है 100k, this is the statement, and I input 50, suppose I input 50, then what will be the output? Yes, everyone, yes, everyone, error, एकता से none, okay, okay, Divya syntax error, with you see outside, none, error, outside, gap then outside, okay, Anushka, Vasu error, okay, and Tanu outside if condition, okay, Tanuj, sorry, चलिए, तो यहाँ पर एरर है वसु का, एकता का और दिव्या का. Only 3 output is error and 1 more output. Anushka console. No sir, sorry if not possible. It is not possible. Okay, not possible. Okay, chale. So let's see what will happen. I show you. Okay, I input 100
and outside if condition is there. Okay, what I write outside if condition is there. Okay, I write something like this and I input. Okay, print outside if condition. Print. Okay, now I again, so this is what error. Print outside if condition, indentation error, expected and intended block. क्या कहा उसने? Expected and intended block, यानी कि ये expected है, ये आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपने if लगाया. देखो यहां पर मैंने क्या किया था, देखो intended कर दिया था, मैंने भले ही कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, बट क्या कर दिया मैंने, इंटेंडेड कर दिया. देखो ये एरो, मेरा कर्सर कहां से आ रहा है, इंटेंडेड होके आ रहा है. तो यहां से दोबारा करते हैं, यहां से आ रहा है ना, यहां से आ रहा है, ये इंटेंडेड होके आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी, नाउ रन दिस कोड अगेन एंड अगेन प्रिंट आउट ऑफ स्टेटमेंट. प्लस साइड लास्ट टाइम हमारा सेव नहीं हुआ था. लेट्स अगेन आई रन दिस कोड. ओके एंड अगेन एरर. ठीक है, सो व्हाट हैपनिंग इज दिस एरर. मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि इफ कंडीशन को, केवल 3 लोगों का आंसर सही थे एंड अनुष्का ऑल्सो, कि इफ के साथ अगर आपने एटलीस्ट एक स्टेटमेंट नहीं दी तो क्या होगा, तो होगा ये इट जनरेट एरर, है ना. तो क्या हुआ कि हमने एक भी स्टेटमेंट यहां नहीं दी है, एक भी स्टेटमेंट हमने यहां पर नहीं दी है. इन दैट केस इट जनरेट एन एरर. क्या आ रही है यहां पर, एरर जनरेट हो रही है, ये देखिए. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव वेरी सिंपल इफ एल्स. ओके, इफ एल्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ एल्स, नेक्स्ट वी हैव if else. Syntax. If condition and suppose option 1 else option 2. ठीक है, तो जब हम if कंडीशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, if और if else में क्या डिफरेंस है. देखिए जब हम if का काम कर रहे थे, if के साथ काम कर रहे थे, तो क्या था, जस्ट वेट, जब हम बच्चों इफ स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे थे, यहां पर कोई कंडीशन थी हमारी, ठीक है, उस सिचुएशन में यहां पर हमारी ऑप्शन केवल 1 ही था. नंबर ऑफ स्टेटमेंट बहुत सारे थे, बट लेकिन वो एक ही साथ रन होने थे. लेकिन अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि भाई कंडीशन मैच करे तो ये रन करे, कंडीशन मैच ना करे तो ये वाला रन करे. ठीक है, कंडीशन मैच करे तो ये वाला रन करे, कंडीशन नहीं मैच करे तो ये वाला रन करे. ठीक है, ओके. अब वी हैव 2 कंडीशंस. तो इसमें देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात क्या क्या है कि कंडीशन केवल इफ के साथ दी जाएगी, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होगी. देखिए एल्स के साथ मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, कंडीशन केवल किसके साथ लिखी जाएगी, इफ के साथ. और अगर कंडीशन हमारी होती है ट्रू, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, इस सिचुएशन में हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है ना, अगर, ठीक है ना, इफ ब्लॉक executed only condition evaluates true.
अगर कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है उस सिचुएशन में हमारी इसकी कंडीशन कॉल होगी, अदरवाइज हमारी एल्स की कंडीशन रन होगी। ठीक है, लेट्स सी ए सिंपल एग्जांपल। ओके, लेट्स आई एम गिविंग यू एग्जांपल। ठीक है, सो आई इनपुट सम वैल्यू, इफ x इक्वल है लॉकडाउन। ओके, अगर x इक्वल है लॉकडाउन के तो क्या हो, सॉरी कॉलन साइन मस्ट है, प्रिंट 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 ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंटिन्यू, एल्स 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 फिजिकल फेस टू फेस या फिर हम कहें क्लासरूम क्लासेस विल बी ओपन। ठीक है, क्लासरूम क्लासेस विल बी ओपन। So this is the question. Now let's run this code. I write lockdown. Okay, sorry. Okay, I need to write lockdown in this single quotes. ठीक है, so it's evaluate true. Online classes will be continued. If I input anything else from the lockdown, तो classroom classes will be open. ठीक है ना, या फिर either we can enter input lockdown status। ठीक है, सो इफ x इक्वल है यस के और x इक्वल है y। ठीक है, तो क्या करे, ऑनलाइन क्लास विल बी कंटिन्यूड और क्लासरूम क्लास विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, स्टेटस। सो लेट्स रन दिस कोड अगेन। आई इनपुट y, sorry again, sorry, I need to input because I write evaluate, so I write to insert। ठीक है, online classes will be continued। if I input no, classroom classes will be continued। ठीक है, if you don't want to write this, just do one thing, remove here from this, I put at hash, and this is okay now। let's see, I input yes। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंटिन्यूड। फिर लॉकडाउन स्टेटस नो, classroom classes will be continued, lockdown status yes, online classes will be continued। so this is the way we can evaluate our code very easily। so we have if else conditions, means we can provide two different things, either this, either this condition will be continued, either this condition will be continued। this is the way we can define if else statement। okay, if we need to define more than one statement at a time, okay, if we need to define more than one statement at a time, okay, let's suppose I need to define if condition, okay, statement TATEM statement, and elif some more condition I have condition, so some other statement I need to write elif, so many other condition I have elif, right?
and finally we can write else to give the last step. Okay, but this else is optional. If you required, you can define. If you're not required, you not need to define. Okay, if you're required, you can define. If you're not required, you not need to define this, right? How can we implement this? Let's see a simple code on it. Sorry. If I'm writing COLOR, color equal ho red or red or color इक्वल हो R. ठीक है, अगर हो तो stop, print what? Stop. Next condition we have elif color is green, sorry, elif green and G. तो क्या करें? Go. Okay, and elif, ठीक है, if yellow or should I say white? In that case print, you know what, print ready to go. Okay, else कुछ नहीं है फिलहाल, else हमारे पास है. Okay, this is okay now, right? Okay, so let's run this code. What happened? Okay, there is a mistake. Color and color. Any other mistake? No. Yeah, it's lockdown status here. No. Input signal, SIGNAL. Signal status, है ना? Input signal status. Okay, I input something. Just I say this. Yeah. Input signal status. I input red. So stop. I input G. Go. I input Y. Ready to go. Right? So we can do multiple statement like this, or if in else I can provide what, print if any other statement I provide, so wrong, error, wrong statement, wrong input. Okay, wrong input. I just do this. So I input some blue like B, so wrong input. So multiple statement I can provide. Getting? Okay. So else is optional here. Just in the previous code I not write else. In this code I write else, right? So else is optional here. You can use this type. Okay. So by this we completed our conditional statement. Conditional statement we have completed, and just for your knowledge, other languages, okay, other languages also have a switch concept, switch statement. What? Switch statement, switch. Okay,
switch statement. ठीक है, switch statement, ठीक है, not available in Python. ठीक है, नॉट अवेलेबल इन पाइथन. पाइथन में ये स्विच नाम की स्टेटमेंट होती ही नहीं है, कोई स्विच नाम का कंसेप्ट नहीं है. ओनली पाइथन ओनली हैव इफ, elif, if else, sorry, if elif or if elif else. These four combination we have to apply conditional statement on Python. Okay, so tomorrow we discuss iterative statement and try to complete transfer statement also. So by completing these rest of two concepts, our Python basic concept is completed, and from Monday onward we start some things new which we have not done yet. Okay, if anyone required a 1 or 2 days fast classes for we have discussed what package, we have discussed module, if anyone a function also, if anyone no function we have completed, I think in this session also, in this revision session function we have completed also. So if anyone required a short description, a fast track concept on module as well as on package concept, so you told me on my personal window on WhatsApp, so I will repeat in a single day both module and package concept in a single day only, so we can start our the new concept of Python. Okay, so based on today's conversation, as I discussed today, for the project